नमस्कार। वर्ल्ड पोइट्री मूवमेंट के तहत आयोजित इस वर्चुअल पोइट्री रीडिंग सेशन में मैं आप सभी तमाम दर्शकों का बहुत-बहुत मैं एहतराम करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हम उपस्थित हैं उत्तर पूर्वी भाषाओं के तमाम लब्ध प्रतिष्ठित कवियों के साथ और इसके साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं डेनमार्क से इंग्लिश पोएट क्लोज एंकरसन जी। मैं बारी-बारी से एक-एक को मंच पर आमंत्रित करूँगी। सबसे पहले क्लोज एंकरसन जी, ये सीधे जुड़े हैं हमारे साथ डेनमार्क से। क्लोज एंकरसन सर, हार्टिएस्ट वेलकम टू आवर प्रोग्राम। Thank you so much. Thank you for having me. It's a pleasure. इसके बाद मैं अगला आमंत्रित करना चाहूँगी कालिंग बोरांग जी। कालिंग बोरांग जी। हाँ जी। कालिंग बोरांग जी आदि भाषा के कवि हैं। ये हमारे साथ जुड़ रहे हैं अरुणाचल के पूर्वी हिस्से पासीघाट से सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कालिंग बोरांग जी एक प्रोग्रेसिव फार्मर है। ही इज जॉइनिंग अस फ्रॉम पासीघाट, ईस्टर्न अरुणाचल। कालिंग बोरांग जी, many heartiest welcome and many best wishes to you. इसके बाद थैंक यू सो मच। इसके बाद मैं आवाज देना चाहूंगी रोकुम बादो जी को। रोकुम बादो जी। नमस्कार बिनी मैम। नमस्ते। रोकुम बादो जी एक गालो पोएट हैं। इनकी मातृभाषा गालो भाषा है और ये अपनी मातृभाषा में लेखन करते हैं एंड बाय प्रोफेशन आप इंजीनियर हैं। आप हमारे साथ वेस्ट कामिंग से जुड़ रहे हैं। Many best wishes to you, sir. थैंक यू मैम। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगी ओन तेरुन सर को। ओन तेरुन सर। कार्दोम सर। ओन तेरुन जी, he is joining us from Assam. ओन तेरुन जी असम के कार्बी जनजाति से आते हैं। आप कार्बी भाषा के आप युवा कवि हैं। हार्टिएस्ट वेलकम यू ओन तेरुन सर। ओन तेरुन सर के बाद इसके बाद मैं आवाज देना चाहूंगी मैडम इनुमोनी जी को। मैडम इनुमोनी दास जी। इनुमोनी मैडम। नमस्ते। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आप असमिया भाषा के आप कवित्री हैं। शी इज द रिनोन पोएट ऑफ असमिस लैंग्वेज और आप हमारे साथ ईटानगर से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अ वेरी वार्म वेलकम टू यू इनु मैडम। थैंक यू। विपुल रेगुन जी कुछ क्षण में हमारे साथ जुड़ेंगे। जब वो जुड़ते हैं उनसे मैं आप सबसे मुखातिब करवाते हुए उनका मैं परिचय करवाऊंगी। येशे दोरजी तोंगची जी। येशे दोरजी तोंगची जी, ही इज द वेटरन राइटर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। सर आपका भी बहुत ज्यादा स्वागत है। वेलकम सर। आपके आने से मैं दर्शक हूँ। जी सर। सर आपको भी बहुत स्वागत, वार्म वेलकम। आपको देखते ही ओन सर के चेहरे पर एक बहुत मधुर मुस्कान खिल रही है। ओन सर आपको देख के बहुत ज्यादा खुश है। बहुत स्वागत है। इसके साथ हमारे साथ हैं विपुल रेगुन जी। विपुल रेगुन जी। Vipul Regun ji, Mr. Vipul Regun, he is a multilingual poet. He writes in Assamese, he writes in Hindi, he writes in Malayalam. Vipul Regun ji,
A very warm welcome to you. And Bipul Regon is joining us from Assam. हमारे बीच कृत्या पोएट्री मूवमेंट के डायरेक्टर रति जी, उनकी तबीयत कुछ नासाज होने के कारण, तबीयत में कुछ ऊंच नीच होने के कारण आप उपस्थित हैं बतौर इस पूरे कार्यक्रम के दौरान हमारे साथ बना रहेगा, हम ऐसा उम्मीद करते हैं. एंड एट द सेम टाइम मैडम, वी आर विशिंग यू फॉर योर स्पीडी रिकवरी मैडम. तो अब हम समय ज्यादा नहीं गवाते हुए हम सीधा कविता पाठ पर आते हैं. मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगी, फर्स्ट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट श्री कालिंग बोरांग जी. कारिंग बोरांग सर इज एन आदि पोइट. सर, मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि आप अपनी कविता आदि भाषा में, आपकी जो मातृभाषा है आदि भाषा में, आप अपनी कविता यहाँ प्रस्तुत करें. कालिंग बोरांग सर फ्रॉम पासीघाट. कालिंग बोरंग सर, आई एम अफ्रेड कालिंग बोरंग सर की वहाँ शायद कुछ नेटवर्क की दिक्कतें आ रही हैं. आई थिंक ही इज हैविंग सम नेटवर्क इशू. तो हम विलंब नहीं करेंगे, देर नहीं करेंगे. हम कालिंग आबो, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जय, मैं सुन पा रहा हूँ. ठीक. कालिंग आबो पेशे से, बाय प्रोफेशन, कालिंग आबो एक प्रोग्रेसिव फार्मर है. कालिंग आबो ही इज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ लूमरडाई लुमिनस लिटरेरी अवार्ड. तो कालिंग आबो, हम चाह रहे थे कि आप अपनी कविता आदि भाषा में, आपकी मातृभाषा में आज यहाँ प्रस्तुत करें. जी. वेलकम टू ऑल कोऑपर्ट पार्टिसिपेंट्स. सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं मूलतः अपनी भाषा आदि में लिखता हूँ, कभी कभी लिखने की कोशिश करता हूँ. तो इसी दौरान जो मैंने अपनी भाषा में कविता लिखी है, इसका पहली कविता मैं पाठ करके सुनाता हूँ. पहला, कोरोना लो न्योगना. कोरोना लो न्योगना सेकोडी किदुने सेकोडी किमाने kanken kumang amig lok kapanam ko iyang kumang bulu giboka tu bum kidungam la giborong ko embu alat kumang COVID-19 kinam lo sikayam la kakot ko pudo medical gari dem kaya nam teperung mudo ami kudi delok adung atogem kala rego ko kakarung emla mudo mingmom kangke pemla mutuai anin lote amotomang ayala mingmom ukit mutuai kinama ayon suye emla mangkumotomang ayena na aidung ngok kaya bosonam takama mungtipanam kamang bosonam kamang ngok angong kedua sekokom mudu manam kamang bekelunamam mupasuk ke arang kue alok pedonge popekoku bekeponamam aropa mutuai molok asia radang koku migomakomam aropa mutua milo bum gelan mamayai sorkari luligam aropa tatua milo bum sikapa nyong mamayai
nyok dokom urga apa kalik dua apa rapasining takama yilik dua apa mingmup kali pagam kasik sudua apa dadi ke nyok yang amla मुहिक सुधवा पर। अब मैं दूसरी कविता यह है नौंगोक, शीर्षक है नौंगोक। नौंगोक सीधु sok mulu muno sukanga nongok gudu sok kaleng kano sukanga isi mixie duyema isi mixiem tipana marma nyolanga real diem marma nyolangem tipana amla mengka sunamai ana takuma gumayem ana bana bangena aputa para golayem abubale lagjuma muta sukangai ana ni tom tom nama nokanyoru lo atamang abu orman panama noka apilo putomang no ile tatangkai opana bu onam rupa nom ni tom kuram itu payuni nam rupa nom asini jing kuram no ile tatangkai inkomi bu kamang kalau di tuling asyam kadung godang ne inko uyue tanmang kalau di doling rorongem katok godang ne mumun ke keranga padong kong kue yai ulu ke ni toma opan yok tunga tui rat pu nam kwai asirai be mama bulu ke orman pe no miram gan no ko pe kam ko doget kai ayang mu pang ke arang mula dumpo pe sole pala ilang ki bo pe dugle pala kongkuli pe ko rayo pur ko mu pae kumulo alang kuka ana bu iganga ana bu ap iga dungada todu kom todu mi monam ko ya mo kom ya mo ya me monam ko sobu kom gum bu mo sonam ko apung musem mo solang kuka araba sem yi mo solang kuka aroda supakom no ngok thank you ये थी मेरी दो कविताएं बहुत सुंदर कालिंग बोरंग जी, एक बहुत सुंदर कविता और बहुत ही संगीतात्मक था। Now I will read the Hindi translation. Now I'm going to read the Hindi translation. सबसे पहली कविता आपका कोरोना के दौरान मृत्यु। कौन स्वस्थ है, कौन अस्वस्थ है, देखकर पता नहीं चलता। काश आंखों से वो दिखाई देता। वे ले गए उसे बीमार कहकर, ले जाने के बाद वह वापस नहीं लौटा। कोविड-19 से उसकी मौत हो गई कहकर चिट्ठी आई। अस्पताल का वाहन देखते ही यह अंदाजा लगाया, लोगों के व्यवहारों को देखकर ही कुछ तो गलत है ये महसूस बस चेहरा देखने की इच्छा थी, परंतु नजदीक भी जाने को इजाजत नहीं। प्यार से उसके चेहरे को छूना चाहती थी, बीमारी के संक्रमण के भय से छूने की इजाजत नहीं। कोई बात नहीं, मेरे सभी मित्र दुरुस्त हैं, चिंता की कोई बात नहीं, डरने की कोई बात नहीं मेरे मित्रों, किसी पर कोई शंका नहीं। उसकी बातों को केवल स्मरण ही कर सकते, बिन मौसम बरसात की जैसे। उसकी कही गई हर शब्द को सच्चा मानना, बारिश से कुछ समय के लिए पनपा पानी जैसे। अधिकारियों द्वारा दी गई हिदायतों पर विश्वास कर लिया होता, उसे कहीं बाहर घूमने ना देता। सरकार की बातों पर यदि अमल किया होता, उसको इस तरह जाने ना देता। मर भी जाता तो शव
वो यूं ना त्यागा जाता, सारे सगे संबंधी रोकर विदाई दे जाता। अंतिम दर्शन की कामना पूरी कर लेता, जाना इंसान का दस्तूर है, मन को यही समझा लेता। ये उनकी पहली कहानी, पहली कविता। दिस वाज हिज फर्स्ट पोएम। नाउ आई एम कमिंग टू हिज सेकंड पोएम, और कविता का शीर्षक है तुम मेरे हो। हिंदी ट्रांसलेशन। तुम मेरे जीवन में दिल का सुकून हो, तुम मेरे जीवन में आंखों का नूर हो। शोक भरी अश्रु जो बहे, तुम ही उसे पोंछने वाली, दुख जो उभर कर बहने लगता, तुम ही उसे शांतावना देने वाली। कहकर यकीन जिस पर होता, माँ के निधन के पश्चात, माँ का आसरा देने वाली, पिता के अक्षम हो जाने के बाद पिता समान संभालने वाली। कहकर गर्व जिस पर होता, तुम मेरे हो। So this was the translation. This was the Hindi translation. मैं अब कालिंग बोरंग जी के बाद अब मैं बुलाना चाहूंगी रोकुम बादो जी को। रोकुम बादो सर, he is a poet and at the same time he is lyricist, and by profession he is an engineer. रोकुम बादो जी, मैं आपको इस मंच पर मैं आपको बहुत ही आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ। कृपया आप अपनी कविता का पाठ करें। आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को, अनम्यूट, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। सॉरी। शुक्रिया जमुना मैम कि आपने मुझे इस मंच पर मौका दिया। सबसे पहले मैं थोंकी सर का नमन करता हूँ। इनको नमस्कार करते हुए इनके आशीर्वाद से, जो कि एक महान लेखक है अपने प्रदेश के सिर्फ नहीं सारे भारतवर्ष में आप जाने और माने जाते हैं। आपकी उपस्थिति हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। मैं एक गालो भाषा में कविता का पाठ करूंगा। कविता का शीर्षक है मिसिर लिमोम अब्सोल्यूरम। मिसिर लिमोम अब्सोल्यूरम यगदुवा मुन गद्दा दाजी लीलो दान लीलुअम मृग हग मुन गद्दा तुम सी अवरागा दिस नाम मेंका तोयो नरम दोयम मुखका तोयो मिसिर लिमोम अब्सोल्यूरम यगदुवा मुन गद्दा तुम सी अमरा हिलू रालुआ काकमायम लोब पोलम लोब दोब कोसे कोल्लम दोस दोला जिला रूमा आई आको कोसे कोल्ले बिम्बा कुयम येदलो चिन अनगीतलो दाजी दानो लीली सिगिम लीला रूमा एगम मुदला कामा तमा ब हित तेलु तेमा बजू तुम सी अमरा हम दूमुला जू मिसिर लिमोम अमतो लीरोम यगदो व मेन गद्दा दाजी दानो लीलुअम मृग हग मुन गद्दा Huri hilo kobo kwa kabe nam gadde guti guti ge tebu nyobu ge nyoda ba gom boom kolong ega meba let bokte elek dorlek naru gadde kadule lebe hen pan ge pigu pago timen domen log ega meba pomte jette ge diram morm ani ega आज gonna be hokala ju emge dedna misir lemom amto lero yega doga muin gadda daji lilu dani lilu mriga hagga muin gadda tumsi amraga din sinam meka toyo nanam doyam mukka toyo. Thank you. This was my first poem. ये एक
अपने जो वातावरण को बचाए रखने की बात इसमें कही गई है, शायद मैडम के पास इसका ट्रांसलेशन है। मैं अपनी दूसरी कविता पाठ करना चाहता हूं। इसका शीर्षक है इंद्रब दमा व बदाम काचो तोलाका। बोई बोलोलो रिपालम्मो दोई लुमालो चिंतापालम्मो योना बदा होरिनादि योना बदा गागनादि एगम चेमुम केल्पम्मो दाकी व दाला इंद्रब तोलाका कालिया इंद्रब दमा व बदाम काचो तोलाका Genamlo badunga chana aninma ye yolo indikina ebedi chemma sinamlo bakoba ina kudin lama inkinam imurnam chenlama bada alnam darlin nam homama rukiba rola dendap tolaka muega indap damaba badam kacha tolaka lote log inkiba inna yedmanala buluk lekor kolek dabam kaki tolaka Magic Beko Kokilo Erdinga Kikanam Gola Bulu Bada Parkom Kaki Tolaka Make of the Korega Urbana Akinaji Jagondala Buluk Ditom Doyam Taki Tolaka Indra Damaba Badam Kachotola Jinnava Lakore Korge Kaulamola Lakorem Hikiba Higin Tolaka Kognega Yanpua Taula mola, gompiram megabla tain tolaka. Yona moklo budilo olikredi egam lobo koche chensima. Yona bitter golo momin parde egam chin lobo kol kasima. Yordiga billora koche bikur pokuba egam kadla dakiba datlaka. Indra dababa badam kacho tolak. Padiga kalunam no, kohke monala, dor nimikam dag poyolaka. Pabuga kalunam no, naya monala, bin hibulo rumum mavaka. Dun dekum karla, inter dekum majola, gunam lakoram korap tolaka. Indra dababa badam kacho tolak. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, Rokum Badu sir. Thank you. मेरे पास आपकी पहली कविता का मेरे पास ट्रांसलेशन उपलब्ध है। आपकी दूसरी कविता का फिलहाल उपलब्ध नहीं। मैं पहली कविता का मैं ट्रांसलेशन में पढ़ती हूँ। Now I will read the English translation. English translation. Oh, folks who lives on cereal crops, whose hopes lie on cultivation of rice and millet, let me tell you the importance of forest in human life. Let me tell the tale through my song. The clouds will not feed rain to rivers and streams in summer months. If woods and forests do not exist, cultivation in the fields will not be possible. If the rivers and streams do not come alive, that is why we must not cut down trees recklessly, but we must let the jungles thrive abundantly. That we used to see in our daily life, hori, hulok, kubo, and kuak trees have been destroyed for building of houses for the high ones, lagoons and branches in rivers, rich in aquatic wealth. Bamboo groups of various kinds have been exploited to extinction for luxurious food and drinks of the rich and elite. Is there a true son of motherland who dispel out these evils and lead the masses in preservation of our flora and fauna? So this was the English translation. Once again, thank you so much, Rokumbado sir. Now I would like.
अगर अनुमति हो तो दूसरी कविता का हिंदी अनुवाद में पाठ करने की कोशिश करूं। मोस्ट वेलकम, बहुत स्वागत है, आप स्वयं पाठ थैंक यू करें। मैम। मेरी दूसरी कविता का गालों में शीर्षक था इंदब दमा व बदाम काचो तला का। निकलने से पूर्व राह को देख लेना, ये शीर्षक बनेगा। किताबों में ये बात तुम्हें नहीं मिलेगी, न संतों के प्रवचन में सुनाई देगी। राह कौन सी सीधी और सरल है, कौन सा डगर मंजिल को ले जाएगा और कौन सा तुम्हें भटकाएगा, इन बातों को जानने का कोई आसान तरीका नहीं। हर बात को परख कर अमल करना मेरे बेटे, निकलने से पूर्व राह को देख लेना मेरे बेटे। दुनिया है आने जाने वालों का एक मेला, कौन कहा जाता है किसी को खबर कहाँ। किसकी राह सही थी, कौन गुमराह हुआ, कोई किसी से साझा नहीं करता यहाँ। तजुर्बा और विवेक को आगे रखना मेरे बेटे, निकलने से पहले राह को परख लेना मेरे प्यारे। भीड़ में से चंद ही लोग मंजिल को पहुंच पाते हैं, उनकी पदचिन्ह को पहचानो। आवाजों के मेले में जो आवाज बुलंद और असरदार हो, उनकी प्रतिध्वनि को सुनो। ज्ञानी की वाणी दूर से ही पहचानी जाती है, ऐसी वाणी का मनन करना मेरे बेटे, निकलने से पहले राह को परख लेना मेरे प्यारे। धारा जो बह निकलती है चट्टानों से, धारा जो बह निकलती है चट्टानों से, ढलन की ओर ही बढ़ती है। उसे इल्म कहा कि कहाँ चट्टान और कहाँ खाई है। पत्थरों से टकराकर वो बुलबुले बनाती है और खाई से गिरकर झरना बन जाती है। खाई में गिरकर झरना बन जाती है। शांत धारा हो या ठोकर खाती झरना, चलती बस आगे को ही है, मोड़कर स्रोत को लौटना उसके लिए असाध्य है। तुम मगर अंधी धारा नहीं, उसकी तरह औंधा मुंह न गिरना मेरे बेटे, निकलने से पूर्व राह को परख लेना मेरे प्यारे। शुक्रिया, थैंक यू। बहुत सुंदर कविता रोकुम बहादुर सर, बहुत बहुत सुंदर कविता और बहुत ही भावपूर्ण कविता आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट श्री विपुल रेगोन जी। विपुल जी, मैं आपको स्क्रीन में देख नहीं पा रही हूँ। विपुल जी, मुझे लगता है कुछ तकनीकी समस्या आ गई है विपुल जी के वहाँ। विपुल जी जैसे ही जुड़ेंगे हम उनसे काव्य पाठ करवाएंगे। तो हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट esteemed poet. He is none other than On Teron. On Teron, he is a young poet and at the same time he's a short story writer. And he's also a secretary of Jambili Literary Foundation. On sir, मैं आपको बहुत सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ कि आप अपनी कविता यहाँ प्रस्तुत करें। ऑन तेरोन सर, अपनी मातृभाषा कार्बी भाषा में आप कविता पाठ करेंगे। He will recite Karbi poems. He is a Karbi poet. Please, on Teron sir. सबसे पहले कृत्या पोएट्री मूवमेंट के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से सुनाई नहीं दे रहा है। उनकी वहाँ अब थोड़ी सी तकनीकी समस्या आ गई, अब जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेट्स वेट फॉर अ मोमेंट। सर प्लीज कंटिन्यू। ऑन सर जी जी कंटिन्यू। जी 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 मैम।
इस कवि सम्मेलन पर सबसे पहले बहुत खुश हुआ तुलसी सर इस कवि सम्मेलन पर है। जी On sir, please continue. जी मैम जी। सभी को मेरा कार्डम नमस्कार। बहुत अच्छा लगा, स्पेशली जमुना मैम के जरिए, जमुना मैम के वजह से आज इस कवि सम्मेलन पर भाग लेने के लिए सुविधा मिला है। तो जमुना मैम, रति सक्सेना मैम को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ। सबसे मेरा पहला कविता कार्बी भाषा से, कार्बी जनजाति असम के रहने वाली एक जनजाति है। तो मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगा अपनी मातृभाषा से। हिरबांग अनुंग नोन के जुम हिरबांग होरारा किलोते जो पंखang komat niapan kasonsa aning kiti aning kasedeng kapasu hobi non lom ke araki sita komat ne inoranem soki amen noksi pachurui pasi len kapasu alang pan kiruan si kapangkhang titi kaya son kali non lom ke horaraki kali tahar kopi araki lone ajat non hirbang non kang thurje aning amke celalo pusonte hirbang komat ne pen ron tama lamu tuju joji non ke araki puseta komat ne pan kasotsa kali kiruro apot hirbang anong non jumpo। और मेरा दूसरी कविता कार्बी भाषा से आप लोगों को सुनाना चाहूंगा। वांगथानन चिकिबिसी अतुंदन hijik tekang tha kangdir tang ciklu sintu apu alom nangkang me kikat tha monitum mamikri kecha marani nang phansi richoman nang jipit manai karam thi ahwar methan kang jo anathu pen nang wangno nang phan nang chingthum don po wanglo te durmi pe nang chilam kang tha nang dam pujul sita sengkreng barlata tiruthe posita sumbi asengwe alo nang ke thapang ji pi besia muka nang che ponrino la que netum kerengji arsim si manpo जी मैम मेरी भाषा से इतना ही। अंग्रेजी अनुवाद। हाँ सर, सबसे पहले तो आप मेरा धन्यवाद, मेरे तरफ से जो मुबारकबाद है वो आप स्वीकार करें। आपकी कार्बी भाषा में बहुत मिठास है और आप जिस शिद्दत से, जिस लगन के साथ काव्य पाठ कर रहे थे, काबिल तारीफ है। मेलोडियस, बहुत ही मेलोडियस। Now I will read out the English translation. English translation of his first poem. Title is "This graceful name of poet has gone profound." When a poet is drowsy in drunkenness, the whole night he would be criticizing somebody, rebuking, showing his anger, murmuring.
But these days in his drunkenness, he's taking and retaking repeatedly the name of some lady, spending the night in her praise, not like it usually was. Maybe these days his drunkenness is not from wine. What is his new narcotic? Whatever may it be, a poet no longer wants to make wars. If not, there would certainly have been some tales of poet waging wars. This anesthetic effect is not to curse anyone, rather only to praise. This graceful name of poet has gone profound. This was the first translation of his first poem. Now I will read out the second translation, and the title is High is the Price of Man's Corpse. Who is not afraid of that? Man does not spin the thread to bid farewell with glamour and joy, although for a short period man takes birth, bringing bags of dreams and desires, jokes, criticism, praises, hopes, all mingled. As long as he lives, only the righteous and holy one will receive blessing of other men. An unholy person gets no holy place to stay. The truthful receives praises, respect. The liars get only reproach. This is the fixed rule of the world. A clearly seen fact, the wicked are spit upon, discarded as their reward. Truthful get love. This is the law of the living world. But in the midst of the culture of death, be it good person or a wicked one, there is a scent of words to praise in the droplets of the tears for everyone, a share evenly distributed. A face which has been smeared with darkness while alive will be gilded in gold on the day of demise. The pride which was sold in the criticism will be returned with a precipitation from men's eye, because the price of man's lifeless corpse is very expensive. Throughout the body of the dead, in the poem of a man, the beginning comes from sadness and end with it. Throughout the body of the dead, the echoes of frustration cannot invade. The wind of curse, rebukes cannot conquer. Thus, that is the world of man, cleansing with the leaf of holy basil. Then, why is that so bad? Then, why is that so feared? Do not be afraid, because do not be afraid, because the price of death is higher than price of living. So this was the two translation of Onteron sir's to Karbi poem. बढ़िया Once again, congratulations on sir. Many congratulations. Thank you, ma'am. Thank you. अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए now I would like to invite Inu Moni madam. Inu Moni madam, she is a poet, she is a teacher, and she is a translator. इनु मैडम मैं आपको अपनी असामिया कविता पाठ करने के लिए यहाँ आमंत्रित करती हूँ. Over to you. धन्यवाद. सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कृत्या वर्ल्ड पोएट्री मूवमेंट के रति सक्सेना मैडम, ब्रिजेश सिंह सर,
और मिस डॉक्टर जमुना बिनी मिस मैडम कि मुझे ऐसे लायक समझा कि मैं यहाँ में आप लोगों की समक्ष मैं अपनी कविता की पाठ करूं। तो सबको तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। तो मैं शुरू करती हूँ मेरी पहली कविता। उसकी नाम है, शीर्षक है यात्री যাত্ৰী। দেৱালত গোজপোতা গজালত উফন্দি উঠিছিল বিষণ্ণ সময়ৰ অসুখ। জিব্ৰাঘাত, কৰাঘাত অথবা হাতুৰিৰ আঘাত। এটি গজালৰ আঘাতত তছনছ হোৱা নাছিল কংক্ৰিটৰ দেৱাল, যিদৰে বিধ্বস্ত হৈছিল জিভাৰ আঘাতত হৃদয়। ইতিহাসক বাৰু কিমান পাছত এৰি থৈ আহিলো। শ্ৰেণী বিভাজন, মাৰ্ক্সীয় দলিল, বহু যুগৰ বুৰঞ্জী নেকি? প্ৰত্নতাত্ত্বিক মানৱৰ দৰে চাই ৰলো মই সেই দুচকুৰ অগ্নিশিখালৈ। ক'ত দফন কৰি আহিলো, কেতিয়া সমাধিস্থ কৰিলো পুৰাতন মানৱীয় অনুভূতিশীলতাক? আধুনিকতাৰ চমকত চমকৃত, উচ্চ শিক্ষাৰ গৰ্বৰে গৰ্বিত বিশ্বায়নৰ বাসিন্দা আমি সঁচাকৈয়ে? এটা অবুজ প্ৰশ্ন তথাপি। কতা এতিয়াচোন সুযোগ পালি যেতিয়াই তেতিয়াই মুচৰি পেলাব খোজে অত্যাধুনিক আধুনিকতাই मानवतार पुरातन प्रश्वास। धन्यवाद। ये मेरी पहली कविता थी और दूसरी कविता मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ। इसका शीर्षक है उत्तरण। उत्तरण। সম্ভৱতঃ এটা দিন, এটা মুহূৰ্ত, যিদিনাৰে পৰা মই তোমাৰ প্ৰেমত পৰিলো, মোৰ বাবে পৃথিৱীখন হৈ পৰিছিল অনন্য। অভিভূত মোৰ কলিজাতিৰ মাজেৰে বৰ নিশব্দে বৈ গৈছিল নিজান এখন ভৰুণ নৈ। মই তোমাৰ প্ৰেমত পৰাৰ দিনা মোৰ টেবুলত জ্বলিছিল এডাল হালধীয়া মম। দুখৰ বোকাত লেটি লৈ যেতিয়া মই ককবকাই আছিলো, সেই অশেষ সময়বোৰতো তুমি মোক তুলি আনিছিলা আলফুলে। তোমাৰ কোলাত মোৰ থৈ মই পাহৰি গৈছিলো মোৰ আকুণ্ঠ ভৰি থকা নীলা নীলা দুখবোৰ। বন বিৰিখৰ সেউজীয়া সুষমা, চহৰৰ গগন পিয়াহী কংক্ৰিটৰ দালান, আৰু তাৰে মাজত লেটি লৈ থকা জীয়া কলিজাবোৰৰ খিকিন্দালি, অথবা কাৰুণ্যৰে স্তব্ধ হোৱা নিৰ্জন ওঠবোৰ। তুমি আঁকি যোৱা নৈশব্দতাৰ মাজত বুৰ যোৱা এখন বিশাল পৃথিৱী। আৰু মই বুৰ যাওঁ অন্তহীন এলানি সপোনৰ গভীৰ মাদকতাত। তুমি বাৰুকৈয়ে জানা, তুমি আছা, সেইবাবেই আছো মই, আৰু আছে আমাৰ শাশ্বত প্ৰেম। তোমাৰ প্ৰেমত জাহ যোৱা মোৰ মুগ্ধ হৃদয় আৰু বেদনাৰে চপচপীয়া হোৱা মোৰ কলিজাত পূৰ্ণতাৰে নিতুল নিৰুপম তোমাৰ মুখ। সৌ সিদিনা আলিবাটত পোহৰৰ প্ৰতিযোগিতাত নিৰ্মমতাৰে ওলাই পৰিছিল নগ্নতা। মাটি, মানুহ আৰু জোন তৰাৰ সাজ পিন্ধা অপৰূপ তোমাৰ সৌন্দৰ্যত সিদিনাও ভাস্বত হৈ আছিল তোমাৰ চিৰন্তন ৰৌদ্ৰোজ্জ্বল স্বচ্ছতা। আৰু প্ৰখৰতাত জ্বলি ছাই হৈ গৈছিল উৰণীয়া চাটকবোৰ। অন্ধতাই মোক বান্ধি থোৱা নাছিল, কেৱল প্ৰত্যয় আৰু পবিত্ৰতাত উজ্বলি আছিল মোৰ পদূলি মুখ। তুমি শাশ্বত, তুমি ভাস্বত। আচলতে তোমাৰ পোহৰতে মই অজানিতে এন্ধাৰৰ পোচাক খুলি পিন্ধি লওঁ পোহৰৰ সাজ।
আৰু এদিন বোধহয় সময় আহিব আমাৰ সকলোৰে বাবে য'ত চেঁচা বৰষুণত তিতিম আমিবোৰ আৰু ক'ব নোৱাৰেকৈ আমি সকলোৱে পিন্ধি ল'ম তোমাৰ সাজ আৰু আমি যাত্ৰা কৰিম উত্তৰণৰ শাশ্বত অবিৰত সুশোভিত সময়ৰ যাত্ৰা। Thank you so much. इनू मैडम, बहुत बहुत सुंदर कविता, बहुत सुंदर कविता। ऐसा लगा जैसे मैं कोई मधुर संगीत सुन रही हूँ। बहुत ही सुंदर कविता, इसके साथ साथ बहुत सुंदर वाचन। Now I will read out the English translation. English translation of her first poem, Jatri, titled as Traveler. Ailments of sordid times were in a space on the nails embedded on the walls. Tongue lashing, a resounding slave, or knocking by a hammer, which is whose complementary. The concrete wall was not shattered at the strike of a single nail, the way the heart was shattered at the strike of the tongue. How far behind did we leave history? Class division, Marxist text, class division, Marxist text, history of many a times. Like a neanderthal of Paleolithic era, I continue to gaze at the flame in the two eyes. Where have I buried? Where have I buried? When did I put to eternal rest the ancient human feelings? Are we the inhabitants of globalization, entrailed in the glitters of modernity? Entrailed in the glitters of modernity, still an unknown question, still an unknown questions hangs on, but now the ultra-modern modernity. But now the ultra-modern modernity, at its own sweet will, tends to crush the ancient breath of humanity. This was the first translation. Now I will read out second translation. Title of the poem is Uttaran. Only one word, love. Yet how deep it penetrates into the sweet heart from the very day when I fell in your love. The world becomes so ecstatic when I fell in your love. A candle was burning yellowish on my table. I was in deep pain and agony. I was in deep pain and agony and surrounded with obnoxious. You took me on your lap. And just when I forgot everything, all my crowned sorrows, resting on your warm lap, the woodlands are captured by blossoms, yet lays skyscrapers in cities, and all of that hilarious noise of human heart, with silent lips crying in deep pain. I see the whole world as painted by you in solitude, and enter deeply to seek solace in the world full of dreams, where desires my heart, urges my soul to wander. You know you are here, so am I. So am I. You know you are here, so am I. And that's why exists our eternal love. My heart throbs in your love and mourn in bitter pain. On the day, on the vast street, it seems extreme nudeness in the rat race competition. Among the men folk adorned with soil, human, moon, stars, you seem to be an everlasting beauty.
you seem to be an everlasting beauty. And on that eventuality, there prevails a scorch light, and your face seems so reddened as the sun, upon which all the tiny creatures turn to ashes. Darkness doesn't envelop me. Darkness doesn't envelop me. Only purity and holiness enlightened my courtyard. You are immortal. You are vivid. You are sizzling light. I divulge my darkened garments. I divulge my darkened garments to replace the suit of light. And I hope, and I hope this time will certainly come for all of us where we will range in cool, dazzling shower, unaware we all, unaware we all will wear your suit and will make a journey towards into never ending forever and ever. So this was the English translation of Inu Madam's second poem. Now I would like to invite Klaus Ankersen from uh, uh, Denmark. He's directly joining us from Denmark. But first of all, I want to read out his biodata. Klaus Ankersen sir, he is a writer, poet, artist, performer, literary activist, and translator from Denmark. He writes bilingually and works internationally, having performed his poetry at literature festivals in more than 20 countries around the world. He is the author of 17 books, and selected material have been translated into Swedish, Finnish, Estonian, Russian, Polish, Czech, Ukrainian, Romanian, German, Urmut, Bulgarian, English, Uzbek, Spanish, Malayalam, and Macedonian. He recently performed with reading of his poetry at the 14th International Poetry Festival in Venezuela, 30th International Poetry Festival in Medellin, the Kritya-Poetry Festival, and the Poetry with Prakriti Festival in India, as well as gave a workshop at the quarantine train and talked to Bangalore Review about India and traveling with poetry, beside numerous performances in Copenhagen. He have contributed to various international anthologies as well as published original full collection of poetry in Ukraine, India, and Romania. Sir, we are very, very happy to have you among us. Sir, I'm so happy to invite you. So please, we are really very dying to listen to your recitation. So please go ahead, sir. Thank you for having me. Thank you for inviting me and having patience with me. It is a very stressful and busy time in Europe right now. So I would also like to, for my first poem, it's a new poem. It's going to be in my new collection. It's the title poem, and it's called "This is Radio Europe." And I have to give sort of a disclaimer, because there will be some swearing words in this poem in English and in the Scandinavian languages as part of the narrative. So please, you have to bear with me, or put the fingers in your ears. There's no malintent in it. It's part of the poetry. This first one is called "This is Radio Europe." This is Radio Europe with its final podcast. The only thing we can say is fuck. The only thing we can say is fuck. Wow, that's wild. Fuck, that's sick. Fuck, cunt, dick, fuck, shit. Wow, really? Wow, that's incredible. Fuck, bastards. What the fuck? Shit, we're fucked. This is Radio Europe. This is Radio Europe
with its final podcast. This is Radio Finland, vittu, saatana, perkele, satanan, vittu. This is Radio Denmark, satans forpulede pis, røv, fuck, lort. This is Radio Norway, fan, pøle med dritt i helvede pup. This is Radio Sweden, fy jävla fan. Reality is a movie directed by faceless people nobody knows, satana perkele. We are the leading roles with no rights, no language, and no voice, Vito. We understand. It's better if we just obey. We understand that the rich need encouragement and that we want to be them. We understand that the poor needs regulations and strict rules and that we never want to be lost like them. But as long as we obey, we will be taken care of. We understand the contract handed down through time. We understand the morning light. We understand dancing to the beats. We understand standing in line. Oh, yes, we understand standing in line, doing our thing, being good people, doing the right thing. But this is digression. It's all about the beacon. It's all about the beacon and the light it shines above the clouds. It's not about the Panama Papers or the great reset of Klaus Schwab and World Economic Forum. It's not about the Mark Zuckerberg metaverse waiting to roll out its digital arms and lull us to sleep for the final time while Google's mothership, Alphabet, CRISPRs our new code. It's not about the artificial intelligence or the new era of personalized nanomedicine. It's not even about the 7 billion DNA samples collected in quantum computers to assemble the ultimate master blueprint. Oh no. It's not about that, Radio Europe. It's not about Greta Thunberg. It's not about the climate change, the dollar world, the solar storms, or the deep pockets of methane, or the deeper pockets of the super rich, blaming everything on you and me while making plans. It's a bit about how we love to blame ourselves, the way we wash our used tuna fish cans, sort our trash. It's about the faceless horror of squandered opportunity. It's a bit about the sixth mass extinction and dead species we haven't even heard of. It's about the death of poetry in the eyes of the young as they open their veins and let their souls flow into the screens. It's about the dance of Ahriman and the need for a planet of pantheist shamans. It's about that, Radio Europe, the voiceless voice of a dead cow mooing from a ditch somewhere, a red flower, a blue sky, a green forest, a silver fish, a step so light it seems like a flight. It's about that, Radio Europe. It's about the language we're losing. That's what it's about. Pretty wild, isn't it? Fuck, it's sick. Perkele, satana, vittu, jävla, fan, farini, helvete, Lord. This is Radio Europe. This is Radio Europe with its final podcast. That was my first one. And I think I would like to dedicate the second one to I think I would take one from this collection, and it's a nature poem. It's about cherries, and there's no profanities in this poem, so you can take your fingers out of your ears now. It's called Cherry, My Cherry. 1,000 light years ago, a poet was working his field, the earth between his fingers, making his heart sing, his soul pious, his mind full of stars. Cherry, my cherry,
I just can't get enough of you. I just can't, he thought, and had another one as he went along. 100 years ago, a poet was walking his field, the earth between his toes, anchoring the mast of his ship on the night side of Gaia, setting his firmament straight among the stars. Cherry, my cherry, I just can't get enough of you. I just can't, he told the sky. No matter how full my eyes are, my stomach is as hungry as my soul, he told himself, and ate another cherry. Today, as you listen to this poem, a poet is tending his field, the earth, a promise in his nostrils, singing of new dawns and round-faced angels with a one stem. Cherry, my cherry, I just can't get enough of you. I just can't. His fingers write in the dark soil under the sunset. Tomorrow, in 1,000 light years, a poet will farm his land, eat a cherry, and think of you. Thank you. Actually, sir, I'm totally speechless. I mean, that was so profound and such a strong poetry. I mean, I'm just having goosebumps. Oh my God. Thank you so Thank much. you so much. Thank you so much. It just, blew up my mind. Such a strong poems. Oh my God. Thank you. Glad you liked it. I was what to say. I was breathless. Oh my God, so strong. Many congratulations and many thanks. Many thank you, Klaus Ankerson sir. And really, this was very strong poetry. Very strong. With this, we have come to end of this program. इसके साथ ही मुझे भी कविता पाठ करना था, लेकिन समय 1 घंटा का था जो कि पूरा हो चुका है. So that's why I won't be reciting my poem because we are running short of time. इसके साथ ही मैं हर एक से इनू मैडम आपका बहुत धन्यवाद. आपने असमिया कविता की मिठास लेकर आप इस मंच पर आई और रोकुम बहादुर सर गालो भाषा में आपने बिल्कुल ही एक लय और संगीत के साथ आपने पाठ किया. विपुल रेगोन जी हमारे साथ बीच में जुड़े थे, लेकिन वहाँ बारिश और तूफान के कारण उनके वहाँ नेटवर्क की दिक्कतें आई, जिस कारण उनको वहाँ समस्या हुई. और कालिंग बोरंग अबो, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप अपनी मातृभाषा आदि भाषा में इस मंच पर आपने बहुत खूबसूरती के साथ कविता पाठ किया. और असम से जुड़े एक और हमारे युवा कवि ओन तेरुन सर, आप भी अपनी कार्बी भाषा का स्वाद लेकर इस मंच पर आए. और इसके साथ-साथ मैं रति मैडम ने कहा कि प्लीज़ रीड. तो मैडम मैं अपनी एक छोटी-सी मैं कविता मैं यहाँ पाठ करना चाहूँगी. कविता का शीर्षक है मैडम, चूँकि आपने कहा इसीलिए अ, मैं ज़रा इसको रोकते हुए जस्ट मैं ये लूँगी 1 सेकंड मैं मैडम ये अ मेरी कविता का शीर्षक है पहाड़ और आदिम निवासी. पहाड़ और आदिम निवासी. मैं पढ़ के सुना रही हूँ. जी. मैं दरअसल मुझे लगा कि मुझे उस तरह से पढ़ने को समय नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने ये सोचा मैडम आपका आदेश है तो मैं ज़रूर पाठ करूँगी. ज़रा 1 सेकंड में यही निकाल के मैंने रखा हुआ था. अ, कविता इस तरह है, पहाड़ और आदिम निवासी. अ, पहाड़ों की ऊँची चोटी पर बादल रुई के पाहों सा तैरता रहता. पहाड़ों के गगनचुंबी ऊँचाई पर बादल रुई के पाहों सा तैरता रहता. उसके नरमाहट को
उसके नरमाहट को सहलाते तुम, उसके नरमाहट को सहलाते तुम, पहाड़ की ओट से, पहाड़ की ओट से सूरज मध्यम मध्यम बुझ जाता, सूरज मध्यम मध्यम बुझ जाता। पर एक सवाल है, अलग कैसे करोगे? पर एक सवाल है, अलग कैसे करोगे पहाड़ और उसके आदिम निवासी को? पर एक सवाल है, पहाड़ और आदिम निवासी को अलग कैसे करोगे? ये एक पहाड़ी चेतना की कविता है और बहुत ही लगभग 2-3 स्टेंजा की कविता। चूँकि समय समाप्त हो रहा है इसलिए मैंने एक ये बहुत छोटी-सी कविता का मैंने पाठ किया। सो इसके साथ और पुंची सर आप भी हमारे साथ लंबे समय तक आप बने रहे। आपकी उपस्थिति ने हमें बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया। इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया थोंची सर आपका। And last but not the least, close Ankerson sir. We are so happy and we are really your presence and your recitation. It's added lot of meaning and lot of value to our program. And I'm thankful. Uh, uh, I'm just actually I'm so overwhelmed. I'm very much overwhelmed. Thank you from the core of my heart. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. तो इसके साथ ही दर्शकों हम अ, हमारा ये जो ऑनलाइन वर्चुअल पोएट्री रीडिंग वाला कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। आपसे अगले बार हम फिर कुछ नए कवियों के साथ हम फिर से मुखातिब होंगे। तो अभी हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू।